Hello students, a very good morning to all of you. I welcome you all at the Saval classes. So today we are going to start the lecture number 3 of the second series of English MCQs, where we are preparing for the Master Cadre 2021. I hope you all are fine and I hope you all are preparing well for your exam. So, before moving on to the question series, don't forget to like the video, subscribe the channel ताकि आप ये important videos miss ना करें और share करें इसको अपने friends के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि वो भी इसका बेनिफिट अवेल कर सके। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज के साथ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे एंड फॉर योर एग्जाम एज वेल। ऑल राइट, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज के साथ। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हाट satirical poem was inspired by an incident between Lord Peter and Miss Arabella Fermor? Epistle to Dr. Arbuthnot, Windsor Forest, The Rape of the Lock, none of these. Very good morning to all of you. A very pleasant good morning to all of you. बड़े ही इजी क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। लॉर्ड पीटर और एराबेला फर्मर की कहानी किस पोयम में आती है? यस, इट इज द रेप ऑफ द लॉक और पोप ने लिखी थी अपने फ्रेंड जॉन कैरल के कहने पे। ठीक है, पोप ने ये पोयम लिखी थी अपने फ्रेंड जॉन कैरल के कहने पे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, टू विच वर्क बाय in which work by Pope do you find the proverb to err is human, to forgive divine? हाँ जी, पोप के किस वर्क से आपको ये प्रोवर्ब मिलता है? To err is human, to forgive divine. Essay on Man, Essay on Criticism, Epistle to Dr. Arbuthnot या Epistle to a Lady? From which work by Pope you get this proverb? Right, it is taken from Essay on Man. Essay on Criticism, sorry. Yes, it is taken from Essay on Criticism, not Essay on Man. पढ़ के लगता है, डेफिनेटली पढ़ के यही लगता है कि Essay on Man में से है, but it is from Essay on Criticism. चलिए, question number 3. In the Rape of the Lock, the Baroness provided a pair of scissors by. सीजर्स कौन लाके देता है बैरन को बिलिंडा के जो है बाल काटने के लिए? इज इट थैलास्ट्रस, इज इट एरियल, इज इट बिलिंडा और क्लैरिसा? बच्चे, इट इज एसे ऑन क्रिटिसिज्म, आप चेक कर सकते हो, इट इज एसे ऑन क्रिटिसिज्म, नॉट एसे ऑन मैन। मैंने सुबह वापस चेक किया है, आपका MCQs का सेशन स्टार्ट करने से पहले चेक किया है। इट इज एसे ऑन क्रिटिसिज्म, नॉट एसे ऑन मैन। यू कैन चेक इट, you can check it on Google, right? चलिए, yes, it is Clarissa, right? Clarissa gives the scissors to Baron. Question number 4, who can be called the first of the great English novelist? हाँ जी, फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट जो है किसको कहा जाता है? हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, लॉरेंस स्टर्न या टोबियास स्मॉलेट? First of the great English novelists. It is Samuel Richardson, right? Samuel Richardson is first of the great English novelists. बच्चे, death, sin was daughter, death was son, ठीक है? sin was daughter, ये कंफर्म हो गया, राइट? कल वाले ये जो क्वेश्चन में डाउट था उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। डेथ वॉज सन एंड सिन वॉज डॉटर। ऑल राइट, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रेटेस्ट नॉवल ऑफ हेनरी फील्डिंग इज? बच्चे, सैमुअल रिचर्डसन ही तो है। सैमुअल रिचर्डसन इज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट। हाँ जी, yes, it is Shamila, Joseph Andrews, Tom Jones or Clarissa? Right, it is Tom Jones. The greatest novel of Henry Fielding is Tom Jones. All right, question number 6,
who intended to write a kind of writing which I do not remember to have seen hitherto attempted in our language. हाँ जी, किसने ये बात अपने एक वर्क के प्रीफेस में लिखी थी? That I am going to attempt a new kind of a yarner. Joseph Addison, Henry Fielding, Samuel Richardson या Alexander Pope? किसने बोला था ये? Kind of writing which I do not remember to have seen hitherto attempted in our language. That I am going to attempt a new kind of a yarner. It was Henry Fielding. Right. Henry Fielding ने अपने जोसेफ एंड्रयूज के प्रीफेस में लिखा था. ठीक है? Henry Fielding ने अपने जोसेफ एंड्रयूज के प्रीफेस में लिखा था because he was going to write a mock epic poem in prose. Right? He was going to write a mock epic poem in prose, जो कि बिल्कुल नया यानर था. Okay, it was a new yarner. So that is why he said that he is going to attempt a new yarner. Question number 7. The idea of universal grammar was given by. universal grammar का idea किसने दिया था? William Lepov, David Yule, Noam Chomsky या Leonard Bloomfield? Who gave the idea of universal grammar? Very right, all of you. It is Noam Chomsky. Absolutely right answer. Question number 8. Dash is a figure of speech in which two vastly different objects are likened together. For example, the broken heart is a damaged china pot. Is it a simile? Is it a metaphor? Is it a conceit or none of these? Hanji, two different objects, vastly different objects. Two vastly different objects are likened together. Simile, metaphor, conceit or none of these? It is conceit. ठीक है? Metaphor की definition क्या होएगी? Metaphor की definition होएगी comparison without the use of and, as and like. Right? Comparison without the use of as and like. ये फर्क है metaphor और conceit की definition में. ठीक है? ये फर्क है मेटाफर और कंसीट की डेफिनेशन में. बच्चे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फादर ऑफ नॉवेल. हमने कहा फर्स्ट ग्रेट नॉवेलिस्ट. फर्स्ट नॉवेलिस्ट वाज रिचर्डसन. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इट. क्वेश्चन नंबर 9. Dash is a sound in the production of which there is obstruction, complete or partial, of the air passage. हाँ जी, कौन सी साउंड्स में जो है ऑब्स्ट्रक्शन होती है? Is it a vowel? Is it a consonant? Is it a diphthong or a glide? When there is an obstruction, complete or partial, of the air passage. Very right answer. It is a consonant. Very right. Question number 10. What is the full form of IPA? International Phonetic Alphabet, Indian Phonetic Alphabet, International Phonetic Alphabet, Phonology Alphabet या International Phonetic Association? हाँ जी. What is the full form of IPA? The full form of IPA is International Phonetic Alphabet. Very right answer. International Phonetic Alphabet is the full form of IPA. Very right answer. Question number 11. What is the difference between acquisition and learning of a language? Acquisition और learning में क्या difference होता है? Learning is natural, whereas acquisition is conscious. Acquisition is not natural, whereas learning is conscious. Acquisition focuses on grammar, learning doesn't. Yeah, none of these. So what is the basic difference? What is the basic difference between acquisition and learning? Very right. Acquisition is natural. ठीक है? Acquisition अपने आप होती है, जबकि learning के लिए एक proper environment की जरूरत होती है. ठीक है? Learning requires a proper environment. जैसे हमारी ये class है. ठीक है? Question number 12. Who is known as the father of psycholinguistics? Father of psycholinguistics किसको बोला जाता है? William Woolf, Wilhelm Wundt या William Wundt? Who is the father of psycholinguistics? The father of psycholinguistics is? Yes, I am waiting for your answers. Very right. It is Wilhelm Wundt. Very right. It is Wilhelm Wundt. Question number 13. Dash is the very end of the story. The part where all the different plot lines are finally tied up.
and remaining questions answered. Is it epilogue? Is it climax? Is it denouement or falling action? Very end of the story. क्या बोलते हैं हम इसको? Epilogue, climax, denouement or falling action? Very right. So yes, the end of the story is called denouement, जहां पे सारे के सारे प्लॉट्स जो हैं टाई अप हो जाते हैं, राइट? रेजोल्यूशन, जिसको हम रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 14. द जनरल स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड्स इज कॉल्ड. जनरल स्टडी, स्पीच साउंड्स की जनरल स्टडी को क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, डिस्कोर्स या सिंटेक्स? हाँ जी, द जनरल स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, द जनरल स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड्स इज कॉल्ड फोनेटिक्स, राइट? क्योंकि फोनोलॉजी जो है वो होती है पर्टिकुलर, ठीक है? फोनोलॉजी जो होती है पर्टिकुलर, फोनेटिक्स होती है जनरल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15. ऑफ विच क्लब पोप वाज अ मेंबर? पोप किस क्लब के मेंबर थे? लेक पोएट्स, स्क्रिबलरस क्लब, ब्लूम्सबेरी ग्रुप या फायरसाइड पोएट्स? पोप किस ग्रुप के मेंबर थे? हाँ जी, पोप किस ग्रुप के मेंबर थे? लेक पोएट्स, स्क्रिबलरस क्लब, ब्लूम्सबेरी ग्रुप या फायरसाइड पोएट्स? वेरी राइट आंसर, ही बिलोंग्ड टू द स्क्रिबलरस क्लब. Absolutely right. He belonged to the Scriblerus Club. Question number 16. What kind of poetry dominated in the age of Pope? किस तरह की पोइट्री डोमिनेट कर रही थी पोप की एज में? लिरिक, अलेगरी, सटायर या ओड? What kind of poetry dominated in the age of Pope? Yes. What kind of poetry dominated in the age of Pope? Very right. It was satire. Absolutely right. क्योंकि पोप भी सटायर्स लिखने के लिए ही फेमस थे, है ना? पोप भी सटायर्स लिखने के लिए ही जाने जाते थे. क्वेश्चन नंबर 17. ऑगस्टन एज इज आल्सो रेफर्ड टू एज एज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन या ऑल ऑफ दीज? हाँ जी, और किस नाम से जाना जाता है ऑगस्टन एज को? ऑगस्टन एज को हम और किस नाम से जानते हैं? राइट, it is also called age of neoclassicism, age of enlightenment and age of prose and reason. All of these, right? It is all of these. Very right answer, students. Brilliant of you. Question number 18. The history of a young lady is the subtitle of. The history of a young lady किस novel का subtitle है? Pamela, Clarissa, Jane Eyre या Mrs. Dalloway? Yes. The history of a young lady is the subtitle of Pamela, Clarissa, Jane Eyre या Mrs. Dalloway. Right. It is the subtitle of Clarissa. Very good. It is the subtitle of Clarissa by Samuel Richardson. Right. Samuel Richardson के novel Clarissa का subtitle है ये. All right. Moving on to next question. Which of these is the first book of Jonathon Swift? Jonathon Swift की first book कौन सी है इसमें से? Tale of a Tub, The Battle of Books, Gulliver's Travels या none of these? Which of these is the first book of Jonathon Swift? Jonathon Swift की first book कौन सी है? Yes, it is Tale of a Tub. Very right, Tale of a Tub. Brilliant, students, brilliant. Question number 20. For which of his book did Swift remark, "What a genius, I had wrote this book"? किस बुक के लिए स्विफ्ट ने ये खुद बोला कि मुझे लगता है कि मैं एक जीनियस हूं, मैंने ये बुक लिखी है? द मॉडेस्ट प्रपोजल, गुलिवर्स ट्रेवल्स, टेल ऑफ अ टब या बैटल ऑफ द बुक्स? फॉर विच वर्क डिड स्विफ्ट रिमार्क, "What a genius that I have wrote this book"? Very right again, it was for Tale of a Tub. Very right, absolutely right. It was for Tale of a Tub. Moving on to question number 21. In which year Swift's popular work Gulliver's Travel got published? Gulliver's Travels किस साल में publish हुआ था? 1726, 1725, 1720 या 1730? हाँ जी, Gulliver's Travels किस साल में publish हुआ था? 26, 25, 1720 या 1730? बिल्कुल सही, 1726 में. And it was republished in 1735.
right? Republished in 1735. Question number 22. Which of the following is Swift's own obituary which he wrote himself? हाँ जी, स्विफ्ट की अपनी कौन सी obituary है? Words on the death of Mr. Swift, lines on the death of Mr. Swift, epitaph on the death of Mr. Swift, or Mr. Swift's obituary? हाँ जी, which of these is the self-written obituary of Jonathon Swift? Right, it is lines on the death of Dr. Swift, Mr. Swift. Right. Question number 23. Which of the following satirical writings was not authored by Jonathon Swift? इनमें से कौन सा वर्क जोनाथन स्विफ्ट का नहीं है? The Tale of a Tub, The Drapier's Letters, The Loved One, or The Modest Proposal? Which of these works is not authored by Jonathon Swift? इनमें से कौन सा वर्क जोनाथन स्विफ्ट का नहीं है? राइट, द लव्ड वन. वेरी गुड. द लव्ड वन इज नॉट रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट. Question number 24. Who named Jonathon Swift as one of the writers he most admired, despite disagreeing with him on almost every moral and political issue? हाँ जी, किस राइटर ने बोला कि जोनाथन स्विफ्ट को वो बहुत एडमायर करते थे, लेकिन बड़ी सारी बातों पे वो जोनाथन स्विफ्ट से डिसअग्री भी करते हैं? वॉज इट जॉर्ज ऑरवेल, जोसेफ एडिसन, जॉन ड्राइडन या विलियम ब्लेक? हाँ जी, कौन से राइटर ने ये रिमार्क किया दैट ही एडमायर्ड जोनाथन स्विफ्ट? He admired Jonathon Swift despite disagreeing with him on almost every moral and political issue. It was, yes, it was George Orwell. Right, it was George Orwell. आई थिंक मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ ये क्वेश्चन, है ना, रिपीट ही हो रहे हैं. इट वॉज जॉर्ज ऑरवेल. राइट. क्वेश्चन नंबर 25. Gulliver concludes his narrative by claiming that all lands he visited belong by rights to which country? हाँ जी, गुलिवर जितनी भी कंट्रीज को, जितनी भी जगहों को विजिट करता है, तो वो क्या बताता है, कैसे कंक्लूड करता है कि ये जो सारी कंट्रीज थी, ये जो सारी प्लेसेस थी, इनको कौन रूल कर रहा था? इंग्लैंड, पोर्चुगल, लिलिपुट या ब्रॉबडिंगनैग? हाँ जी, कौन रूल कर रहा था? Right, it was ruled by England. All the countries came under the rule of England. All right. Question number 26. Which of the following was not one of the pseudonyms under which Swift published? हाँ जी, कौन सा pseudonym Swift का नहीं था इनमें से? A.MB Drapier, Isaac Bickerstaff, Lemuel Gulliver या Jonathon Gulliver? Which of these was not the pseudonym of Jonathon Swift? राइट, इट वॉज नॉट जोनाथन गुलिवर. ठीक है, बाकी सारे पेन नेम्स थे स्विफ्ट के इंस्टेड ऑफ जोनाथन गुलिवर. चलिए, क्वेश्चन नंबर 27. फादर रिप्रेजेंट्स डैश इन अ टेल ऑफ अ टब. फादर किसको रिप्रेजेंट करता है टेल ऑफ अ टब में? गॉड को, प्रोटेस्टेंट चर्च को, रिलीजियस प्रैक्टिस को या बाइबल को? हाँ जी, गॉड फादर किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरी राइट, मेरे मुंह से ही निकल गया, है ना. चलिए, फादर रिप्रेजेंट करता है गॉड को. वेरी राइट आंसर, फादर रिप्रेजेंट करता है गॉड को. क्वेश्चन नंबर 28. इन विच प्लेस द किंग्स लाइब्रेरी इज सिचुएटेड वेयर द बैटल ऑफ द बुक्स टेक्स प्लेस? किस पैलेस में जो किंग्स लाइब्रेरी सिचुएटेड होती है, जहां पे बैटल ऑफ बुक्स चलता है? चार्ल्स पैलेस, हेनरीज पैलेस, जेम्स पैलेस या विलियम्स प्लेस? हाँ जी, किस पैलेस में द बैटल ऑफ द बुक्स चल रही होती है? वेरी राइट, इट इज जेम्स पैलेस. राइट, इट इज किंग जेम्स पैलेस. वेरी गुड आंसर, वेरी राइट. You all are absolutely correct. Question number 29. A modest proposal by Swift was made for reforming the church, improving education, cleansing politics, or for selling poor children as food. टारगेट क्या था, गोल क्या था स्विफ्ट के मॉडेस्ट प्रपोजल का?
What was the target of Swift's modest proposal? हाँ जी, स्विफ्ट के मॉडेस्ट प्रपोजल का गोल क्या था? अरे उसका टारगेट क्या था? क्लेंजिंग पॉलिटिक्स। सटायर नहीं था वो। उसने कोई ये थोड़ी कहा था कि बच्चों को खा जाओ। अरे उसने ये सजेशन थोड़ी दी थी कि बच्चों को खा जाओ। उसने तो पॉलिटिक्स को क्लीन करने की बात करी थी। पॉलिटिक्स के ऊपर सटायर किया था उसने। ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। हु इज द राइटर ऑफ कैटो अ ट्रेजेडी? हु इज द राइटर ऑफ कैटो द ट्रेजेडी? रिचर्ड स्टील, अलेक्जेंडर पोप, जोसेफ एडिसन या जॉन डन? हाँ जी, अरे मैंने कहा था, लेकिन क्वेश्चन तो पढ़ लो यहां पे। किस लिए लिखा था? पॉलिटिकल सटायर था। पॉलिटिकल सटायर था, पॉलिटिक्स को क्लीन करने के लिए था। वो सच में ये नहीं कह रहा था कि हाँ सच में बच्चों को खाना शुरू कर दो। यस, इट वॉज जोसेफ एडिसन, राइट। कैटो अ ट्रेजेडी इज रिटन बाय जोसेफ एडिसन। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ दीज वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जोसेफ एडिसन? इनमें से कौन सा जो वर्क है वो जोसेफ एडिसन का लिखा नहीं हुआ है? द कैंपेन, पब्लिक क्रेडिट, लाइन्स ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर स्विफ्ट या द विजन ऑफ मिर्जा? हाँ जी, इनमें से कौन सी जो वर्क है वो जोसेफ एडिसन का लिखा हुआ नहीं है? राइट आंसर, लाइन्स ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर स्विफ्ट, बिकॉज इट इज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट हिमसेल्फ। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। Who is the writer of the essay Sir Roger at the Theatre? Sir Roger at the Theatre essay के राइटर कौन हैं? रिचर्ड स्टील, हक्सले, जॉनथन स्विफ्ट या जोसेफ एडिसन? हाँ जी, हु इज द राइटर ऑफ सर रोजर एट द थिएटर? सर रोजर एट द थिएटर इज रिटन बाय, राइट अगेन, it is written by Joseph Addison. Very right. It is written by Joseph Addison. हाँ जी। Question number 33. Who is criticized in epistle to Dr. Arbuthnot? किसको क्रिटिसाइज किया है epistle to Dr. Arbuthnot में? एडमंड कर्ल, एडवर्ड कर्ल, एडवर्ड कर्ल या एल्फाइन कर्ल? बच्चे, कॉमिक रोमांस इज जोसेफ एंड्रयूज। कॉमिक रोमांस इज जोसेफ एंड्रयूज। जोसेफ एंड्रयूज है कॉमिक रोमांस। मैंने कल भी आंसर दिया था। मैंने कल भी जाते जाते आंसर दिया था। यस, इट इज एडमंड कर्ल। वेरी राइट, इट इज एडमंड कर्ल। क्वेश्चन नंबर 34। हु वर द चीफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द जर्नल स्पेक्टेटर? हाँ जी, कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन थे द स्पेक्टेटर के? Is it Addison and Steele, Sir Roger and Captain Sentry, A.G. Gardiner and Charles Lamb या E.B. Lucas and Huxley? Who were the contributors to the Spectator? Absolutely right answer. It was Joseph Addison and Richard Steele. Joseph Addison and Richard Steele. Very right. Question number 35. To whom did Pope dedicate the translation of Iliad? इलियड की ट्रांसलेशन किसको डेडिकेट करी थी पोप ने? एसे ऑन मैन में, विंडिकेशंस ऑफ द राइट ऑफ गॉड टू मैन, एसे ऑन मैन में। इट इज विलियम विचले, विलियम शेक्सपियर, विलियम कॉन्ग्रीव या विलियम थैकरे? राइट, इट इज डेडिकेटेड टू द रेस्टोरेशन राइटर विलियम कॉन्ग्रीव। यस, विलियम कॉन्ग्रीव। Question number 36. On which work is the Dunciad model? पोप का सटायर है ये डंशियड, और इसका मॉडल कौन सा है? एब्सलम एंड कीटोफिल, द मेडल, द हाइंड एंड द पैंथर या मैक फ्लेक्नो?
On which work is the Dunciad model? Very right answer. It is modeled on Dryden's MacFlecknoe. राइट मैकफ्लेक्नो लुइस थियोबाल्ड है ना, लुइस थियोबाल्ड को उसी तरीके से कंडेम किया है जैसे कि ड्राइडन ने थॉमस शेडवेल को किया था. ओके, क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज मेड आउट ऑफ द बुचर्ड इन्फेंट स्किन इन द वर्क मॉडेस्ट प्रपोजल? हाँ जी, बुचर्ड बच्चों की स्किन से क्या बनाया जाता है मॉडेस्ट प्रपोजल में? क्लोथ्स, शूज, लेडीज ग्लव्स या बैग्स? What is made out of the butchered infant skin in the modest proposal? It is ladies' gloves. Absolutely right answer. It is ladies' gloves. Very right. Question number 38. Who is the writer of the poems Moral Essays? Moral Essays जो कि पोइट्री कलेक्शन है, ठीक है, जो कि एक पोएम्स की कलेक्शन है. कौन है इसके राइटर मॉरल एसेज के? इज इट एडिसन, इज इट पोप, इज इट स्विफ्ट और रिचर्ड स्टील? Who is the writer of the poem Moral Essays? Moral Essays के राइटर कौन है? Right, it is Alexander Pope. Very right answer. It is Alexander Pope. Question number 39. Who said Tom Jones is a highly organized novel? किसने बोला था ये? That Tom Jones is a highly organized novel. T.S. Eliot, Samuel Johnson, G.B. Shaw या Dryden? Yes. Tom Jones is a highly organized novel. Who said this? Is it said by T.S. Eliot, Samuel Johnson, G.B. Shaw या Dryden? It was T.S. Eliot. Yes, it was T.S. Eliot. It was Eliot बच्चे, it was Eliot. हाँ जी, बड़े सारे बच्चे बिल्कुल श्योरिटी के साथ जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात. बड़े सारे बच्चे बिल्कुल श्योरिटी के साथ जवाब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, मजा आ गया. क्वेश्चन नंबर 40. इन विच ईयर वॉज रिचर्डसन्स पैमेला पब्लिश्ड? हाँ जी, पैमेला किस ईयर में पब्लिश हुआ था? 1742, 1740, 1743 या 1745? हाँ जी, पैमेला किस ईयर में पब्लिश हुआ था? 1742, 1740, 1743 या 1745? So Pamela was published in 1740. राइट, 1740 में. बिल्कुल सही जवाब, सभी का आंसर बिल्कुल सही. क्वेश्चन नंबर 41. टू होम डिड फील्डिंग डेडिकेट हिज नॉवल अमीलिया? फील्डिंग ने अपना नॉवल अमीलिया किसको डेडिकेट करा था? जी लिटटन, लिटटन स्ट्रैची, रिचर्डसन या पैमेला? किसको डेडिकेट करा था फील्डिंग ने अपना नॉवल अमीलिया? किसको डेडिकेट करा था? इट वॉज डेडिकेटेड टू जी लिटटन. राइट, इट वॉज डेडिकेटेड टू जी लिटटन. अगेन कई सारे बच्चे बिल्कुल श्योरिटी के साथ जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात. वेरी वेरी वेल डन. इट इज जी लिटटन. वेरी राइट. क्वेश्चन नंबर 42. चेंज द वॉइस. प्रिंसिपल हैज अवॉर्डेड हिम स्कॉलरशिप. हाँ जी, इसकी करेक्ट जो वॉइस पैसिव आपको इसका बताना है. A scholarship has granted to him by the principal. He has been granted a scholarship by the principal. He has granted a scholarship by the principal. A scholarship was granted to him by the principal. Yes. कौन सा पैसिव होगा इसका? वेरी राइट, ही हैज बीन. यहां पे देखो हैज है बच्चे, ठीक है, और जब हम इसको पैसिव करेंगे तो सबसे पहचान वाली बात ये हैज बीन हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहला तो ये देख लो कि हैज बीन किस सेंटेंस में आ रहा है. देखो ना यहाँ आ रहा है ना यहाँ आ रहा है, और यहाँ तो सीधा ही उन्होंने वॉज कर दिया है ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा. ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 43. चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. Did you see the cricket match on television last night?
हाँ जी, इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच करना है. डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट? किरण आस्क्ड मी whether I saw the cricket match on television the earlier night. Kiran asked me whether I had seen the cricket match on television the earlier night. Kiran asked me, did I see the cricket match on television last night? And Kiran asked me whether I had seen the cricket match on television last night. हाँ जी, क्या बनेगा इसका? इट विल बी बी. ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पे सिंपल पास्ट है. ठीक है, सिंपल पास्ट है, और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो इट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. ठीक है, इट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. तो क्या बन जाएगा? आई हैड सीन. डिड का आई हैड बन जाएगा. ठीक है, डिड का आई हैड बन जाएगा. चलिए, क्वेश्चन नंबर 44. आई डोंट नो व्हाई पीटर इज सो लेट. डू यू थिंक ही डैश लॉस्ट कमिंग हियर? हाँ जी, क्या फिल करेंगे इस जगह पे आप? तो डू यू थिंक, हाँ, बी और डी सेम है बच्चे. यस, हाँ जी बच्चे, अर्लियर नाइट मींस प्रीवियस नाइट. प्रीवियस नाइट की जगह पे उन्होंने अर्लियर नाइट कर दिया बस. So do you think he might have got lost? कि शायद वो गुम गया होगा. अरे वेदर और इफ दोनों आ सकते होते हैं. वेदर और इफ दोनों आ सकते होते हैं, और प्रीवियस नाइट की जगह अर्लियर नाइट भी आ सकता होता है. प्रीवियस नाइट की जगह पे अर्लियर नाइट भी आ सकता होता है. नरेशन में, क्वेश्चंस वालों में इफ और वेदर दोनों आते हैं. चाहे आप इफ लिख दो चाहे वेदर लिख दो. क्वेश्चन नंबर 45. Dash teachers prefer a class that is fairly consistent in having pupils of the same level. हाँ जी, क्या आएगा fill in the blank में? Each teacher, every teacher, neither teacher या whole teacher. यहाँ पे टीचर है, ठीक है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है. बच्चे, इट विल बी एवरी टीचर. इट विल बी एवरी टीचर. ईच के साथ हमेशा ईच ऑफ द आता है. ईच के साथ हमेशा ईच ऑफ द आता है. इट विल बी एवरी. राइट. चलिए, क्वेश्चन नंबर 46. इट इज ऑफन सेड दैट हाइना इज एन अग्रेसिव एनिमल, बट इन फैक्ट इट इज नॉट डैश मेनी पीपल बिलीव. मोर विशियस, so vicious that, as vicious as, या so vicious as. What will be there in the fill up? Right, it will be as vicious as. Right, it will be as vicious as. चलिए, question number 47. Which critic introduced the terms flat and round character? Flat and round character terms किस critic ने introduce करे थे? D.H. Lawrence, वर्जीनिया वुल्फ, T.S. Eliot या E.M. Foster? किसने इंट्रोड्यूस करे थे फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स? यस, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय E.M. Foster. E.M. Foster. Question number 48. Dash is a genre of literature where the author writes about his or her memories, usually going back to childhood. Is it a biography? Is it an autobiography? Is it a memoir or memories? जहां पे राइटर जो है अपनी मेमोरीज के बारे में लिखता है. What is it? It is a memoir. Very right. It is a memoir. Question number 49. Which novel depicts the adventures of a roguish but appealing hero, usually of low social class, who lives by his wits in a corrupt society? ठीक है, hero who is of a low social class, right? Roguish hero. Is it a picaresque novel, psychological novel, sociological novel, or historical novel? It is a picaresque novel. Absolutely right. It is a picaresque novel. And the last question for today.
शेक्सपियर्स डैश ड्रामास दैट आर अपीलिंग टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस. हाँ जी, शेक्सपियर डैश ड्रामास that are appealing to the people of all ages. You have to fill in the blank. You have to fill in the blank. Shakespeare dash dramas that are appealing to the people of all ages. Right. Shakespeare wrote dramas. Right. बच्चे, पिकारस नॉवल होता है जिसमें जो एक कैरेक्टर इधर से उधर भटकता रहता है, ठीक है, जैसे कि जोसेफ एंड्रयूज में, जैसे कि कूली में, ठीक है, जो जो कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता है. ऑल राइट. एंड फॉर टुमारो यू विल बी प्रिपेयरिंग विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, सॉरी, फॉर मंडे, ठीक है, ये टेस्ट मंडे को होगा. राइट. एंड कीट्स. राइट. यू विल बी प्रिपेयरिंग दीज 4 पोएट्स. कल का दिन एमसीक्यू नहीं होगा बच्चे, ठीक है, तो अब हम मिलेंगे मंडे को. सो वी विल मीट ऑन मंडे नाउ. राइट. सो वी विल मीट ऑन मंडे नाउ. ऑल राइट. सो दिस विल बी ऑन मंडे. ठीक है जी. Thank you so much all of you. Have a very good day and just keep preparing, keep learning hard. Thank you so much all of you. Have a very good day.